Hello everyone, welcome back to my channel Physics Tutorials by Jinkle Grover. So today we will discuss the topic significant figures, and this is the second part of this topic. The first part you will get on my YouTube channel, right? So today we will discuss the round off to the desired number of significant figures. That means how to approximate, how to calculate the significant figures up to desired number of digits. That means, for example, I will write here 4 4 5, right? 5 point, let's say it's 5.78, right? So, and I have told you that I want my answer up to one decimal place, right? So what you will do, up to one decimal place you will get your answer. Then the 7 is last digit after the decimal place, so you will break here, right? When you break here, you want to find, that means up to this point, up to 0.7, right? So you want to see कि मुझे अपना आंसर यहीं पे skip out करना है 45.7, or you can round off this number. Means if your last digit, that means here it's 8, if your last digit is greater than 5, you will round off the previous number. But how, right? If less than 5, then what's the answer? Is equal to 5, then what's the answer? So that are some rules. When we do the numericals based on this rounding off, you will get to know what are the rules for rounding off that numbers, right? So first of all, I'll tell you that you will add the significant figures, you can also subtract the significant figures, multiply, and as well as divide, right? So in this lecture we will discuss only addition and subtraction, and the third part that you will get, we will do multiplication and divide of significant figures, right? So let's start. For addition, let's say I will add 4 to 8.5 plus 17.23, right? So before adding these two numbers, first of all you just notice that how many significant numbers in this, right? How many significant digits in this number? So 1 2 3 4. So there are 4 significant numbers, or you can say significant figures in this number 4 to 8.5, right? Now you will see this is your second number, that is 17.23. so how many significant figures? 1 2 3 4. So there are 4 significant figures, that means 4 significant figures in this number. So when you will add this, you will get to know that there are equal number of significant figures, right? Second thing, you will see in this first number, after the decimal place there is only one digit, that is 5, this one 5 only, right? And in the second number after the decimal place there are two digits, that are 2 and 3. So when you give your answer, then what you will see, you want to give your answer up to one decimal place or up to two decimal place. First of all that we have to see, right? So just add this number mathematically, then we will apply the physics rules, right? So यहाँ पे अगर मैं 0 अप्लाई कर देती हूँ, right? So 3 plus 0 is 3, 5 plus 2 7, 8 plus 7 15, right? Here it's 4 and 4. So this is your answer. But if you will see, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1. यहाँ पे पॉइंट्स के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी मुझे अपना आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही देना होगा. वाई? सो व्हेन यू विल ऐड, you will see the weakest limit. What you mean by weakest limit? Let's first understand this concept. So आपको पता है अगर आप ऐड कर रहे हो, फर्स्ट वाले नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ एक, दैट मीन्स 5, दिस वन, राइट? एंड हियर इट्स 2 डिजिट्स, दैट इज 2 and 3. तो आपको मिनिमम के लिए जाना है. मिनिमम किस में है? इसमें, फर्स्ट नंबर में. कितने डिजिट्स हैं? 1 आफ्टर द डेसिमल प्लेस. So you just notice that after the decimal place, how many digits? There are 1 digits, right? So in your answer,
you will see there's only one decimal digit after this, right? So here's decimal, and after this you have to give answer up to one decimal place only. So you will break here because decimal के बाद 2 digits है हमारे पास, बट आपको आंसर अपना एक डेसिमल तक करना है. So you will give your answer up to one decimal place, that means up to 7. बट एज यू नो, आप अपनी मर्जी से इस 3 को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट? सो देयर आर सम रूल्स to ignore this 3 or to take this 3, right? So you have to follow that rules while doing the rounding off. Next thing is, आपको मैंने यहाँ पे बोला जब आप 3 + 0 करते हो तो आप ऐड कर देते हो, राइट? बट आपको क्या पता कि यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि सी 4 to 8.5 जिसने भी आपको ये नंबर दिया ऐड करने के लिए, मे बी उसने भी राउंड ऑफ करके दिया हो आपको, राइट? तो यहाँ पे क्या पता कोई और नंबर हो और आपने सिर्फ आंसर आपका 1 डेसिमल प्लेस तक दे दिया हो. सो दैट 0 इज आवर assumption. क्लियर? सो वी आर नॉट एक्यूरेट इन टेकिंग these numbers. So that's why rounding of figures, rounding of numbers is important, right? And when you will give the answer up to 1 decimal place, you will see the last number that you have to ignore. If this last number 3 is greater than 5, right, then you will add the previous number by 1, increment the previous number by 1. Clear? If this last number that you have to ignore is less than 3, then this number remains as it is. Clear? So now हमारे पास 2 केस हो गए. अगर greater than 5 है तो आप उसके प्रीवियस वाले नंबर में 1 ऐड करोगे, दैट मीन्स यू विल इंक्रीमेंट द प्रीवियस नंबर बाय 1, राइट? इफ द नंबर इज सेम, दैट मीन्स इफ नंबर इज लेस देन 5, द प्रीवियस डिजिट रिमेन्स एज इट इज. क्लियर? नाउ अगर आपका इक्वल टू 5 हो तब क्या करेंगे? दैट केस वी विल डिस्कस लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी, अब आपका जो आपको डिजिट इग्नोर करना है जो 3 है, क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि आपको वीकेस्ट लिंक पे जाना है, एंड वीकेस्ट लिंक में आप में आंसर में देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, राइट? सो यू हैव टू गिव योर आंसर अप टू 1 डिजिट ओनली. सो हियर when you ignore this 3, as you know this 3 is less than 5, right? So when you ignore this 3 and this is less than 5, so this 7 remain as it is. No increment, no decrement, right? So what you will get your answer? Your answer will become 445.7. सो दोनों रूल आपके फॉलो हो चुके हैं. आपकी वीकेस्ट लिंक दैट मीन्स डेसिमल के पास बाद एक डिजिट में आंसर था, तो आपको एक डिजिट में करना है क्योंकि आपको इस नंबर में 1 है और इस नंबर में 2, बट आपको वीकेस्ट लिंक पे जाना है, दैट मीन्स 1 पे, राइट? सो आप 1 तक आंसर दोगे अपना. सेकेंड थिंग, आपने जो नंबर राउंड ऑफ किया वो लेस देन 5 है, सो आंसर रिमेन एज इट इज, राइट? सो योर आंसर विल 445.7 विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So that is how to follow the quotient, right, and the subtraction or addition, right, by using these rules. Okay, so next आपको पता है जितने तक हम जितने सिग्निफिकेंट नंबर तक अपना आंसर देंगे, राइट, उतनी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है. क्लियर? सो अगर आप 5 तक देते तो मोर एक्यूरेसी होती, राइट? जितने तक आपको बोला गया हो क्वेश्चन में आप उतने तक ही इग्नोर करोगे और वहां तक राउंड ऑफ कर दोगे उस नंबर को. बेसिकली बच्चे अब तक आप समझ गए होंगे राउंड ऑफ का मतलब क्या है. डिजिट्स को इग्नोर करना और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में लिख देना, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. सेम नंबर्स लिए हमने, अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे उसका क्या होगा. सो यू विल सी हियर 4 to 8.5 minus 17.23, राइट? नाउ सिमिलरली एज्यूम 0 हियर, सो दैट मीन्स हम अप्रोक्सीमेशन ही कर रहे हैं. मे बी हियर 0 is not 6, 7, maybe else other number, right? So but we will assume 0 here. So when you subtract 10 minus 3 is 7, here 4 left, 4 minus 2 is 2, 8 minus 7 1, 2 minus 1 1, and as it is 4. So फर्स्ट ऑफ ऑल सेम रूल्स, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, राइट? सो यू विल गो फॉर वीकेस्ट लिंक. आपको अपना आंसर 2 डिजिट तक सिंगल डिजिट पे देना है आफ्टर डेसिमल प्लेस. So that means where you break the number here,
लाइक दिस, राइट, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट तक अपना आंसर देना है। नाउ व्हाट यू विल सी, जो नंबर आप इग्नोर कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है या छोटा, राइट, सो दिस 7 इज ग्रेटर देन 5, so that means your previous number is incremented by 1, so here 2 plus 1 is 3 and your answer will be 441.3, that is your final answer. So in this way you have to follow the rules, clear, while doing subtraction and addition. Okay, so next number is, before doing this question I will tell you the rule. See, आपको मैंने ग्रेटर देन 5 के लिए बताया कि अगर आपका नंबर लास्ट डिजिट जो आप इग्नोर कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करोगे राजी, 1 इंक्रीमेंट करोगे अपने प्रीवियस नंबर में, +1, क्या, सो अगर आपका लेस देन 5 है तो आपका क्या होगा, नो चेंज, राइट, सो देयर विल बी नो चेंज, नो चेंज, सी मीन्स चेंज, राइट। नाउ तो केस क्या बचा, अगर 5 आ गया तब क्या करेंगे, राइट, सो देयर ऑल्सो रूल फॉर दिस 5, अगर आप जो डिजिट इग्नोर कर रहे हो वो लास्ट डिजिट 5 है तो तब आप क्या करेंगे, सी, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है जो आप इग्नोर कर रहे हो, आप उसके प्रीवियस वाला नंबर देखिए जैसे हम हमेशा देखते हैं, लेट्स से इट विल बी 44 पॉइंट, राइट, 665, like this, right, and another number is 4.75, clear, so what you will do, दोनों केसेस में 5 है लास्ट डिजिट और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए आफ्टर डेसिमल, राइट, ये डेसिमल है, इसके 1 प्लेस मतलब यहाँ पे मैं ब्रेकअप करूँगी, राइट, सो यहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, सिमिलरली हियर, सो अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, लास्ट डिजिट 5 है, सो हाउ यू विल राउंड ऑफ दिस, आपको उसका प्रीवियस नंबर देखना है, यहाँ पे 6 है, राइट, और यहाँ पे रजे 7 है, सो हाउ विल यू राउंड ऑफ, व्हेन you will ignore the last digit and that is 5, right, not greater than 5, not less than 5, exactly 5, so what you will do, अगर आपका उसके पहले वाला नंबर इवन है, 6 इज इवन नंबर, तो आप इंक्रीमेंट करोगे रजिए +1 से, क्या, सो +1 से आप क्या करोगे इंक्रीमेंट, अगर आपका 5 से पहले क्या है 7, दैट इज ओड, क्लियर, सो रिमेन एज इट इज, नो चेंज, क्लियर, सो आई विल रिपीट दिस रूल अगेन, अगर आपका लास्ट डिजिट 5 है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, उसके प्रीवियस वाला नंबर देखेंगे आप, if greater than that, sorry, if it is even you will increment number that by 1, if it is odd it will remain as it is, right, so this is the third rule, greater than 5 हो तो increment by 1 sure, less than 5 हो तो no increment, that is also sure, if equal to 5 उससे previous वाला नंबर देखिए, if it is even increment by 1, if it is odd it will remain as it is, clear, so these are the 3 rules for rounding off your numbers, clear, I hope you will understand these 3 rules, and if you understand these 3 rules you will be easily able to do the questions, right. Similarly, now you will subtract the question, 3.9 into 10 is power 5, you will see in the screen, right, minus 2.5 into 10 is power 4, so what you will see here, let's discuss. Okay, so you will see here 3.9 into 10 power 5 minus 2.5 into 10 power 4, तो आपको पता है सबसे पहले वीकेस्ट लिंक पे जाते हैं, सबसे पहले वही चेक करते हैं, डेसिमल के पास बाद कितने डिजिट है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, सो नो कंफ्यूजन, अब आपको आंसर आपका एक डिजिट तक ही देना है आफ्टर डेसिमल प्लेस, दैट इज श्योर, क्लियर, नाउ कम टू दिस इज द ऑर्डर्स, राइट, आपको पता है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट अप नहीं करते, राइट, बट जब आप कॉमन लोगे इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो आप मिनिमम नंबर लेते हो, 10⁴ आपने कॉमन ले लिया इन दोनों नंबर्स में से, क्लियर, सो 10⁴ व्हेन यू टेक कॉमन यू विल लेफ्ट विथ 3.9 माइनस 2.5, मैंने यहाँ से डेसिमल हटा के बाय 10 कर दिया और यहाँ से आपने 10⁴ कॉमन निकाला था,
तो एक 10 बच जाएगा, राइट? सो हियर इट्स 10, 10 से 10 कैंसिल, you will subtract 39 minus 2.5, then you will get 36.5 into 10 raised to power 4. Now apply the rules for rounding off because we have to give the answer up to 1 decimal place. यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल प्लेस के बाद कितने डिजिट है 1, तो आपको वही चाहिए, फाइन इंटू 10 raised to power 4. So now what you will see, 36.5 into 10 raised to power 4. How many significant figures in this? See, आपने ये तो देख लिया डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, बट आपको ये भी देखना है ना कि अगर आपके दोनों नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए. सी, इस क्वेश्चन में क्या था राजे, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे और अगले में भी, इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं हुआ. आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर करने थे, आपने कर दिया 1 2 3 4. ठीक है, तो आपने रूल्स फॉलो किए. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी सेम, आफ्टर डेसिमल देयर शुड बी डिजिट नंबर सेम, and rounding off terms अगर greater than 5 or less than 5, right? Now in this question that we discussed here, यहाँ पे आपको देखना है कितने significant figures हैं राजे, 1 2, here 1 2, this order is not counted in significant figures. तो आपका आंसर 2 significant figures में होना चाहिए and after decimal 1 place तक. clear? Now you will see after decimal 1 place तक तो ओके है, but here it's 3 significant figure, but we want your answer in 2 significant figures, right? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है, आपको 2 करना है. इसको क्या करेंगे, पहले पॉइंट को शिफ्ट करिए यहाँ पे. राजे जब भी आप अपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो आपका जो नंबर है ऑर्डर है वो इंक्रीमेंट बाय 1. clear? So you will see here I will shift this point here 3.65, so that means your number will increment by 1, right? So power will become 10 raised to power 5, you will see here, and the point will come after the 3, that means 3.65. but problem is same here, अभी तक हमने सिर्फ पॉइंट शिफ्ट किया है, आपके सिग्निफिकेंट नंबर तो सेम है अभी भी रजे 3, राइट? सो आपको अप टू कहाँ तक आंसर करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस. तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना होगा. क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट चाहिए और 2 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो जाएंगे 1 2. ठीक है, तो 5 आपका इग्नोर करना है आपको. लेट्स सी 5 इग्नोर कैसे करें. हाउ विल यू इग्नोर 5? आपको पता है रजे आपका जो 5 है, सी एग्जैक्टली 5 है, तो इससे पहले वाला नंबर देखिए जो मैंने आपको रूल बताया, 6 इज इवन और ऑड, इट इज इवन, राइट? सो अगर 5 के प्रीवियस नंबर इवन है तो इंक्रीमेंट क्या होगा, बाय 1, राइट? सो 6 + 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इन योर आंसर यू विल गेट आंसर 3.7, राइट? बिकॉज इवन था नंबर. अगर यहाँ पे 3 होता 6 की जगह तो 3.3 एज इट इज रह जाता, बट यहाँ पे 6 क्या है, इवन नंबर, राइट? सो 5 से पहले का नंबर है 6, दैट इज इवन, सो इंक्रीमेंट बाय 1, सो यू विल गेट योर आंसर 3.7 into 10 raised to power 5, that is your answer. clear? So 3 rules keep in mind, I will repeat again. First, after decimal place number of digits should be same. Second, the number of significant figures should be same as in your answer, right? तो आप आंसर उतने में करोगे जितने आपको डिजिट दिए हुए हैं, जितना आप में क्वेश्चन में दिए हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने आपके आंसर में होने चाहिए. थर्ड थिंग, आपको देखना जो टर्म आप इग्नोर कर रहे हो, जो डिजिट आप इग्नोर कर रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है या इक्वल टू 5. क्लियर? सो इफ ग्रेटर देन 5 इंक्रीमेंट बाय 1 प्रीवियस डिजिट, less than 5 no change in previous digit, equal to 5 check out the previous number, if it is even increment by 1, if it is odd remain as it is. So these are the rules for finding out addition or subtraction and do rounding off. Clear? So now this is all for today's lecture. I hope you will understand this lecture carefully. If you find any difficulty, please let me know in the comment section, right? And for the PDF of this video lecture, please follow me on the official Instagram. You will get the link in the description of my video lecture, right? And you will subscribe my channel, please. If जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
please subscribe my channel, right? So that you will get notifications for upcoming lectures also. And please be updated, be consistent for video lectures. You will get regularly lecture series, right? फर्स्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है इसका पार्ट, एंड दिस वन इज सेकेंड, right? In some time you will get further more parts. And please don't forget to subscribe my channel Physics Tutorials by Jingle Grover, and hit the bell icon after subscribing my channel so that you will get updates for upcoming lectures. And share this video lecture with your friends so that they will also get benefits, and this will very helpful for you. Okay, thank you so much. Stay safe, be consistent, take care.